हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमबी ज्योग्राफी में। और मैं इसमें जीआईएस की वीडियोस डालता रहता हूँ और ज्योग्राफी की रिलेटेड वीडियोस भी डालता हूँ लिंक्डइन पे। जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं प्लीज़ प्लीज़ फॉलो करें और इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सॉफ्टवेयर होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा जिसे हम कहते हैं मैप इन्फो जो है प्रोफेशनल 7.5 वर्जन है। और इसके लेटेस्ट वर्जन भी आ चुके हैं, बट मेरे पास अभी अवेलेबल यही वाला वर्जन है। और इस सॉफ्टवेयर को मैं आपको ये फुल्ली वर्जन है, इसमें जो की है वो भी इसमें ऑथराइज्ड की है। तो इसको मैं आपको, अगर सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप मुझे इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर इसको ले सकते हैं। वहाँ पर ये आपको टेलीग्राम पर आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो बताऊंगा मैं इसमें कैसे इंस्टॉलेशन करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। बहुत ही इजी एक्सेस टू सॉफ्टवेयर है, यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। बहुत से लोग आरजीआईएस पर ये काम नहीं कर पाते हैं और ये काफ़ी चीज़ें आराम से इजीली कर लेता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और मिलते हैं पीसी पर कैसे इसको इंस्टॉल करना है और कैसे इसको अनइंस्टॉल करना है। तो आई होप इससे जाने से पहले मेरे ये वीडियोस को लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक ज़रूर करें। और जो लोग मुझे फॉलो तो फ्रेंड्स, करते हैं आज की शुरुआत और करते हैं मैपिंफो इंस्टॉलेशन। मैं चलता हूँ अपनी लोकल ड्राइव पर, जहाँ मैंने ई ड्राइव में सॉफ्टवेयर्स को रखा हुआ है। और इसमें देखिए मैपिंफो सॉफ्टवेयर है। इसको मैं एक बार ओपन करके देखता हूँ तो इसके अंदर आपको सारी फाइल मिलेंगी। ये आपकी एक्सटेंशन फाइल है, सेटअप फाइल है, और ये आपकी, ये आप चाहो तो यहाँ से करते हो। इसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन है, ये की है और इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर का पैक है। तो ये 7.5 वर्जन है दोस्तों, और इससे लेटेस्ट वर्जन ये मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हो चुके हैं, परंतु मेरे पास जो है अभी यही वाला अवेलेबल है। तो मैं इसको आपको करके इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा। तो फर्स्ट वी विल हैव टू just double click on the setup files. So yes, and it will ask to the installation product. Then click here, and the free data, there are many options of is there, but we will have to just click on the Mapinfo Professional. Then the exe starting. Setup is preparing for the installation. Then next, and then yes, आपको accept करना है। Then username, okay, आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। Then I will use MB GIS and the organization is MB GIS and Geography. Serial number, yes, we will have to the paste of that serial number. This is this one, and copy it and then paste it into the here and next. Typical करना है तो then we click and next installation is being started. It will take only 1 minute 2 minutes and has completed. Current updates, internet connections, वो बोल रहे हैं कि आपको इसका नया जो अपडेट्स है वो है, तो क्या आप इंटरनेट पे जाना चाहेंगे? नो, and then the solution is finished and software is exit. इसको close, then close, and here you desktop in the
and you will find Mapinfo software. If it is not available here, then search in software map info. Yes, the application is here. Run as administrator. Open is yes. First time it will take time. Close it. Then open the workspace or open a table. If a workspace is available, then you can start. If not, then not. So first, then here is many softwares, but the most important software is Universal Translator. You can easily translate the files into the many version, like shape files into the arc info info files, and AutoCAD drawing file into the shape files, or shape files into the many layers. So easily export and import the file. But the main in this software is it saved file as a tab. Tab is the extension of these layers, so easily available. Then you can start the open file or workspace. If not, then new table, open a new browser or map, create, and name of the file, that means line, characters, this, okay, create, new file, create, file information, line, add field, contact number, remove field, add field, name, add field, contact number. Name is you can change the characters, like if you want to change the characters into the number, then you can also the change. Here is a integer logical, you can check, select the integer value. So I hope you like this software, and use I will show the use of this software in the next video, and you can wait for that one video. So Janice, before the going to the like my videos and share my videos. Thank you.